Hello and welcome. Welcome to the daily Nifty and Bank Nifty Insights with MJ. Friends, आज है 12th January and we'll be estimating the probable moves, resistance and support levels, buying and selling zones along with a trading plan for Nifty and Bank Nifty for the next trading day जो पड़ेगा 13th January को. Right now, अगर आप हमारे YouTube में नए हैं friends, do consider subscribing to it and don't forget to press the bell icon such that whenever we upload any new video, you get intimation. And of course, be generous to share the video with your friends and trading communities so that they also get access to quality knowledge. Now, if we look at today's daily chart of Nifty and Bank Nifty, friends, the chart tells the whole story. Both the indices open gap down, and first half they were more or less at the lower levels, as I had said in my previous video that market is right now buy on dips and sell on rise kind of scenario. So on the lower sides you could clearly see there is a weak and the buying interest developed. First half of the day market was range bound, while in the second half it took the cues from the Asian market and rallied upside, making a large green candle. All right, today's top gainers were Tata Motors, GAIL, that's Gas Authorities India Limited, Airtel, SBI, and Coal India. While as the top losers were Asian Paints, Titan, Nestle, Hindustan Unilever, and Sun Pharma. Overall, market breadth remained positive today. 28 stocks advanced out of 50 stocks of Nifty 50, while as 22 declined. Broader markets like Nifty, large cap, mid cap, and small cap, they also gained, although the small cap more or less was with a gain of 0.09%, so flat tha, right? But mid cap and large cap, yes, did rally. And अगर हम हमारी जो कल की रेंज हमने दी थी फ्रेंड्स, निफ्टी के लिए दी थी 14,300 से 14,600 की, एंड बैंक निफ्टी के लिए दी 31,500 से 32,600 की रेंज, एंड निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी बोथ ट्रेडेड विद इन द same range with the kind of bias what we had expected. For Nifty, bullish bias we had expected, and for Bank Nifty we had neutral to consolidation bias, right? So you can see that today Bank Nifty made a out candle consolidation kind of pattern. Of course, bullish engulfing pattern hai, but since this candle is capsuling last 3 candles, that's called out candle consolidation kind of thing, right? So अगर trend के perspective से बात करें तो Nifty तो clearly higher high and higher low बना रही है, while as Bank Nifty has made higher high but lower low, and it's gone in a consolidation. But both indices are structurally very strong for the next up move. Now अगर हम price action perspective से market को देखें friends, तो Nifty के लिए 14,500 हमारा पहला लेवल सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट है 14,470 पे, थर्ड है 14,433. अगर 14,383 टूटता है जो कि आज का हाई था, देन इन दैट केस 14,347 विल I'm sorry, 14,433 अगर टूटता है तो 14,383 will be the fourth level of support downside. That could be the max we could witness tomorrow, unless until there is something very special happening which is out of control. Now agar Nifty kal bhi bullish bias rakhti hai friends, of course we will look at the bias at the end of the session after concluding from the data analysis and other market analysis, right? However, अगर कल निफ्टी में बुलिश बायस आता है तो फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो हमको हिट करेगा फ्रेंड्स, वो करेगा 14,602 पे, सेकंड है 14,650 पे, थर्ड लेवल है 14,737 पे. So these 3 resistances on upside we could see on Nifty. So निफ्टी की रेंज जो हमको प्राइस एक्शन से नजर आ रही है वो आ रही है 14,383 to 14,737, while is बैंक निफ्टी के लिए अगर मैं देखता हूं तो डाउन साइड काफी स्ट्रॉन्ग है. 32,200 पे पहला लेवल ऑफ सपोर्ट है, सेकंड है 32,000 पे, थर्ड लेवल ऑफ सपोर्ट जो आज का ओपनिंग प्राइस है 31,836, एंड आज का लो जो कि 31,737 है, दैट्स द फोर्थ लेवल ऑफ सपोर्ट फॉर निफ्टी, फॉर बैंक निफ्टी. नाउ अपर साइड में of course 32,391 is the first level of resistance which is today's high, second है 32,485,
एंड थर्ड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है फ्रेंड 32,613 पे. 32,613 is also Bank Nifty's all-time high of January 20. राइट, अगर 32,613 का लेवल टूटता है तो नेक्स्ट लेवल ऑलमोस्ट 250 पॉइंट ऊपर है फ्रेंड्स, 32,860 पे. So at this point of time, I can see the Bank Nifty has got the support or rather trading range price action perspective से 31,737 से 32,860 की रेंज में दिखाई दे रही है. राइट, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट डेटा पर्सपेक्टिव एंड फॉर दैट वी विल गो टू option chain of Nifty and we will look at option chain which will expire on 14th January. Since Nifty closed at 14,563, so 14,550 will be our at the money strike, right? तो 550 के आसपास में हम देखेंगे फ्रेंड्स कि किस टाइप के पोजीशन बुल्स एंड बेयर्स ने यहाँ पे बनाए हुए हैं, राइट? So let's say 550 पे we could see 1.4 million contracts there, right? And that sounds to be very strong base for support with a 2.4 or rather 2.5 million contracts. So ये हमारा strong support का काम करेगा. और in fact अगर आप yeah, so that was at 14,500 and 14,550 पे भी 600,000 contracts करीब करीब है. तो ये भी हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा. अगर 14,500 का लेवल टूटता है फ्रेंड्स तो 14,450 का लेवल हमारा सपोर्ट 3 का काम करेगा. और 14,400 का जो लेवल है जहां पे ऑल्दो आज 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास में नए आए हैं, लेकिन ओवरऑल 3.0 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स है यहाँ पे. एंड नियर बाई में एक्सक्लूडिंग 14,200 जो कि काफी दूर है, ये हमारा मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, राइट? तो हम इसको यहाँ पे लोअर लेवल का सपोर्ट या स्ट्राइक मानेंगे, राइट? एंड अनवाइंडिंग तो ऑफ कोर्स एट वेरी लोअर लेवल पे हुई, जो कि नेचुरल है बिकॉज यहाँ पे प्रीमियम कम हो गई है. बट नाउ व्हाट हैपन ऑन call writing side, let's look at, right? So you can see there is a massive call unwinding. So call unwinding कौन करता है? Though these are the bears which have lost the hope that the market would go down to these levels, so they have unwound the positions. Now 14,400 still has a 1 million contract, so there are bears sitting there expecting the market may further, by Thursday may go somehow at that level. And 14,500 पे you could see, although 500,000 contracts यहाँ पे आज unwind हुए, but still there are 2 million contracts there. Not only that, 14,550 पे 1.5 million contracts यहाँ पे भी हैं. So although these are in the money, we cannot consider them as a resistance. अगर price इनके नीचे जाएगी तो they will emerge as a very strong resistance levels. So as of now 14,600 हमारा strong resistance level है निफ्टी के लिए. यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट फ्रेश आए, बट ओवरऑल 2.5 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स है. सेकेंड लेवल हमारा जो रेजिस्टेंस का इमर्ज हो रहा है फ्रेंड्स, वो हो रहा है 14,650 पे, जहां पे 1.4 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. एंड 14,700 का जो लेवल है, वी कुड सी दैट 500,000 फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट हियर एंड 3 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स है. सो दिस विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर टुमारो. अगर ये लेवल टूटता है, ऑफ कोर्स 750 का लेवल होएगा, 14,750, वहां पे भी 1.2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट. एंड even 800 पे 3.1 million contracts. Of course, we can consider 800 also as a range. So if you look at the range here, what is visible from option chain writing is 14,400 to 14,700, or agar 700 टूटा तो 800 का level, right? So this you can make a note of it. Now, if you look at the PCR of this option chain series, it is at 1.45. That is quite a bullish PCR, right? हम काफी टाइम से, कल का जो हमारा PCR था आज के लिए फ्रेंड्स 1.52 था, और ट्रेडिंग रेंज मोर और लेस लोअर साइड में यही थी, बट हायर साइड में 14,600 की थी. सो मोर और लेस सिमिलर सिनेरियो वी कैन सी फ्रॉम हियर. एंड बैंक निफ्टी में अगेन आज पीसीआर बढ़ गया है. कल 0.84 का था पीसीआर और आज 0.9 का. एंड ट्रेडिंग रेंज 32,000 से 32,500 की दिखाई दे रही है ऑप्शन चेन से, जो कि थोड़ा नैरो रेंज है इसके लिए, राइट? नाउ
If we look at FIIs data today, FIIs were net buyers with a 571 crore after yesterday's good buying of 3,139 crore. So आज FIIs ने buying कम की for whatever reason. DIIs were net seller with a 1,334 crore in cash market in equities. So overall, DIIs were net seller who sold more than what FIIs bought. So stocks came up. That means maybe today retailers were more gung ho about the market and they bought more, or bigger trenches, right? European markets as well as US markets right now are in consolidation phase. And अगर मैंने कल जो बात की थी कि RBI has expressed their concern of gross NPAs rising to approximately 15% by September 2021 for the banks, that gave a very negative impact in the morning to Bank Nifty. And you could see on a smaller time frame, Bank Nifty pushed downside, right? तो बैंक निफ्टी को थोड़ा रिकवरी करने में टाइम लगा, बट दैट नेगेटिव न्यूज प्लेड देयर. सो कीप एन आई ऑन द व्हाट काइंड ऑफ सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स आर हैपनिंग. माइक्रोज होने दो या मैक्रोज होने दो, वो आपको देखना चाहिए, राइट? एंड RSI अगर हम डेली में देखते हैं निफ्टी का तो 81 है, विच इज इन ओवरबॉट जोन. अपार्ट फ्रॉम दैट stochastics is also on all time frame above than 96 now. मार्केट इज इन हाईली ओवरबॉट जोन, तो करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी भी टाइम. बट करेक्शन फ्रेंड्स बोल के नहीं आता है. हाउएवर वी हैव सर्टेन पैरामीटर्स एट विच वी कैन कीप ऑन लुकिंग. लाइक आज इंडिया विक्स वापस 2% बढ़ गया, कल 8% बढ़ा था, आज इंडिया विक्स 23% में, जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है, राइट, फॉर बुल्स टू मूव फर्दर. तो इसको भी कूल ऑफ होना बहुत जरूरी है. हाउएवर एज लॉन्ग एज मार्केट 14,000 के ऊपर है फ्रेंड्स, मार्केट इज इन बुलिश मोड एंड 14,800 कुड बी आवर नेक्स्ट टारगेट, राइट, despite corrections. Now next trading range of course हमारी 14,400 से 14,700 की निफ्टी के लिए, और बैंक निफ्टी के लिए 32,000 से 32,800 की. Now let's look in a smaller time frame how we can trade nifty tomorrow, right? So let me expand this chart. So as I had been saying that अगर market gap down करके start होती है friends, you will see the buying interest developing in the market. And if it goes gap up, let's say अगर 14,650 पे या 700 पे मार्केट स्टार्ट होती है निफ्टी की, तो you would see that profit booking start होगी, and you might see nifty retracing towards 14,600 or 14,550. and of course वो प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद में मार्केट में रिवर्स फ्रॉम हियर. कल अगर निफ्टी लेट्स से 470 पे या 433 पे स्टार्ट होती है, गैप डाउन होती है, या इवन 14,500 पे स्टार्ट होती है, you would see the buying interest developing. However, whenever you are taking a trade, do look at ORC. ORC अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ में अपर साइड में ब्रेकआउट देती है तो लॉन्ग लें, अगर डाउन साइड में लेती है तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो. 14,500 से 14,600 की जो ये रेंज है फ्रेंड्स, ये एक रेंज बाउंड और वोलेटाइल रेंज रहेगी कल के लिए. एंड टुमारो यू कैन आल्सो सी सम शॉर्ट कवरिंग, राइट? देयर आर पीपल हु हैव ऑलरेडी shorted thinking that Nifty may not cross 14,500 while as Nifty has already got 63 point above than that level. So वो भी एक शॉर्ट कवरिंग की सिनेरियो आपको कल देखने को मिल सकती है. Now बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करें? बैंक निफ्टी में 32,200 से 32,390 का जो जोन है, ये रेंज बाउंड जोन होएगा, इसको अवॉइड करें, या एटलीस्ट हाफ एन आवर ORC के ऊपर प्राइस को सस्टेन होने दें. एंड जिस डायरेक्शन में भी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विद VWAP एंड सुपर ट्रेंड से आपको इंडिकेट करे, आप वहां पे ट्रेड कर सकते हैं. अगर बैंक निफ्टी गैप अप स्टार्ट होती है लेट्स से 32,600 पे या 500 पे, तो इन दैट केस यू विल सी you would be getting a short trades, right? तो आप शॉर्ट कर सकते हैं. आपके टारगेट 32,400 के 32,200 तक के हो सकते हैं. बट बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन स्टार्ट होती है 31,800 पे या 31,700 के लेवल पे, तो इन दैट केस आप लॉन्ग के लिए तैयार रहें. जैसे ही ORC टूटे और डिसाइसिवली टूटे, वैसे ही आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं. ऑफ कोर्स यू शुड हैव अ राइजिंग वॉल्यूम एंड RSI शुड बी अबव देन 60, apart from VWAP and super trend being in green on downside. Okay, so this is how you can trade Nifty and Bank Nifty tomorrow on a smaller time frame. Unfortunately,
investing.com में 10 मिनट का चार्ट नहीं दिखाता friends, otherwise we would have more clarity in that, whichever uh, platform you are analyzing the market in, or trading in your particular platform. 10 मिनट के चार्ट में ट्रेड करें इंट्राडे के लिए, that is the best policy. Now, since indicators are, in a overbought zone, be careful, right? स्विंग लॉन्ग के लिए न जाएं, अभी मार्केट को स्टेबल होने दें, उसके बाद में ही जब ये इंडिकेटर्स कूल ऑफ हो जाए उसके बाद में स्विंग लॉन्ग आप लोअर लेवल से लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा. इंडिया विक्स, यूएसडी आईएनआर एंड गोल्ड के चार्ट को देखना न भूलें. एज ऑफ नाउ गोल्ड एज वेल एज यूएस डॉलर्स इज इन डाउन ट्रेंड. सो बट ऑफ कोर्स एज एन इंट्राडे ट्रेडर आपको करंट मार्केट जरूर देखना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम जो फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट होता है वो, या इंडेक्स का ओपन इंटरेस्ट होता है उसको भी आप ऑप्शन में भी ओपन इंटरेस्ट देख के काम करें. दैट गिव्स यू जो इमीडिएट सेंटिमेंट्स है बुल्स एंड बेयर्स का, वो क्लियरली वहां पे आपको दिखाई देगा. Right. I hope with this analysis you are able to take your trades confidently and you are profitable. Do write in the comment box, friends, what is your opinion about these videos and how you are getting help by these videos in enhancing your knowledge. Right. Thank you once again for watching and liking the video. Please share the video with your trading communities and friends so that they can also benefit from the quality knowledge. Signing off till the next video. Good luck, happy trading, happy investing, friends.